Jai Hind and very good morning. My name is Dr. Tarun Bhardwaj and I will take this module Additive Manufacturing. The subject code is KME071. So let us start with this additive manufacturing. So first of all, let us take about the syllabus. So syllabus of the unit number 1, as the syllabus will cover the introduction part, and then we will just discuss about the details of the additive manufacturing processes, and then the end use applications and the softwares and the software usage, plus the what are the complications we feel in the our software. Okay, so let us start with this syllabus. So in the unit number 1 syllabus, we have the history of the additive manufacturing, what are the advantages of the additive manufacturing, distinction between the additive manufacturing and the CNC machining, because these both techniques are computer aided techniques, and what are the different type of the additive manufacturing technology we have, and the nomenclature of the additive manufacturing machines, then the direct and the indirect processes, prototyping, manufacturing tooling. So these is basically divided, this unit number 1 is divided into the two parts. The first one will cover about the basic introduction of the additive manufacturing, and the second is basically covering you the layer manufacturing process, means what actually happens in the additive manufacturing. As you can see, the polymerization, sintering, melting, extrusion. So these are basically the, you can say, the process that is basically happen in the additive manufacturing technologies. Powder binding, bonding, and the layer laminate manufacturing. There are a few other processes like the aerosol printing and the bioplotter that we will discuss in the unit number 1. So let us start with this syllabus. So these are the outline of my this unit number 1, introduction to the additive manufacturing, and second one is the history, then third is advantage of the additive manufacturing and distinction between AM and the CNC machining. So we will just discuss this whole thing in this unit number 1. Let us start. So first of all, let us start with this additive manufacturing. It is a process of joining the materials. As you see that joining of the material is also basically in the welding, but over here we are used to join the material in the layer by layer fashion. As you can see in this diagram, आप यहाँ भी देख सकते हैं इस diagram में that you are having one layer, this is the first layer, and that is deposited on the second, then third layer is deposited, then the fourth layer is deposited. So in the welding process, what we actually do, that we used to join the two materials, and we do not use to join layer by layer over there. But over here in additive manufacturing process, we used to join the material in a layer by layer fashion. Then the basic advantage of this process is that we can use to make the objects from the directly from the 3D model data. Okay, and it is basically opposed to the subtractive manufacturing technologies. Subtractive manufacturing technologies means like the CNC machining. If we used to create any object and use product, what we actually used to do, that we used to machine that the, you can say, the specimen or any product to get the desired shape. अगर हमको कोई भी अपनी desired shape चाहिए तो हम लोग वहाँ पे मशीनिंग करते हैं. ओके, बट ओवर हेयर अगर हमको कोई desired product बनाना है तो what we used to do, that हम लोग उसको उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं by the layer by layer process, and this term is basically given by the ASTM F42 committee. Okay, so this is about the additive manufacturing process technology. Now I will just tell you about the how this process will start, means what is basically the cycle of this process. If we just talk about the cycle, means how it is basically starting, कैसे start होता है और कैसे खत्म होता है up to the end use application. So let us see. So the first point is the CAD, means we first of all we just require that we need a CAD model for any prototype that we used to create. That CAD model can be either from your, you can say, the CAD software, means you can create any CAD model over there, or it can be by using some scanning, means by using the reverse engineering. If suppose you want to create any product, means you want to remanufacturing of any product, so what you used to do, you used to scan it, then you used to get that data in the CAD form,
and then you will use for this 3D printing. After this CAD, after getting that CAD data, you have to go for the STL convert, means use to convert that into the STL file over here. I will just tell you in the next slide what is this STL. Then this file will be transferred to the machine. As you can see that this is basically the machine. It is basically showing in the computer. ये basically computer में show किया गया है that how your product is being manufactured. Then the fourth is the machine setup. Machine setup is basically consisting of different process parameters. Means you are having a different kind of the process parameters, and that will vary according to the technologies. Means if we are using the polymer technology, so we are having a different kind of the process parameter, and if we are having the metal technology, we are having the different process parameter, because the heating source is different. So the deposition of any product will depend upon this process parameter, or you can say the machine setup. Then after that, this is the build, means where your product will be manufactured, जहाँ पे आपका product बनने वाला है. So this is your illustration of the machines. So after that, there is a remove, means your product is being developed or manufactured. आपका product बन चुका है. Now what you used to do, you used to remove that product from the machine or your base plate. Okay. So over here, this is your remove. So what is the remove? Remove is basically the machining process, means you used to machine that that product by using the wire radium or by using any saw from that base plate. Okay. Then after that, you used to create the post processing of it. This is the seventh point, that is basically the post processing. Post processing can be for your improving the mechanical strength, okay, or sometime it will be also for reducing the pores that will be creating during this process. Then after that, this is your end use application. So this is the whole cycle of this additive manufacturing process. We will just discuss this cycle in the detail also. Okay. Now I just talk about this STL file. So what is the STL file? STL file is nothing but this is your 3D model. ये आपका पूरा 3D model है. So what you used to do, that you have to divide that 3D model into the 2D layers. Okay. Means you have to divide that 3D into a 2D layers, and that layer is having some thickness. Okay. As you can see in this diagram, that this whole 3D model is divided into the number of the layers, and that number of the layers will be depending upon your process, means what kind of the material you are depositing and what kind of the process you are using. Okay. Now when we just talk about this introduction, so the traditional production lies on the removal of the material from this solid cast or mold. So 3D printing adds a layer of the material on the existing layer. As I am telling you that this is a layer by layer process. So you can just see over here in this figure that how they are just making this basically the illustration by depositing a layer on the layer. Okay. So 3D printing is a computer driven additive manufacturing technology, just like the CNC machining. It is also driven by the computer, used for producing the final product from a digital model by laying down the successive layer of the material. Okay. Now so these are the few illustrations that you can see that are basically showing the deposition of the metal and the polymer. So over here, this basically technology is showing about the metal, that how the metal is deposited by using the laser source, and this is basically showing you the polymer by using some IR source. Okay. Now let us talk about the history of this additive manufacturing process, means कैसे ये basically start हुआ, कहाँ से start हुआ. वैसे तो additive manufacturing जो books में है, that will be started from the 1980 in the 1980s, but अगर हम लोग अपने इंडिया ट्रेडिशन की बात करें तो जो कुम्हार है, जो बेसिकली कोई भी प्रोडक्ट बनाता है मिट्टी का, दैट इज ऑल्सो द एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. मीन्स हमारे इंडिया में पहले से ट्रेडिशन था एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का, बट वी डू नॉट रिकॉग्नाइज दैट. हमने कभी इसको रिकॉग्नाइज नहीं करा कि दैट इट इज एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. ओके. नाउ so let us start that about the history of this additive manufacturing process. The earliest 3D printing technology
first became visible in the late 1980s, at which the time they are called the rapid prototyping, RP technologies. Why they just word use this rapid? Rapid is basically because they are used this technology first of all in the prototyping, okay, and that prototype is basically being manufactured very rapidly, because when you used to create the prototype of any product, so होता क्या that you have to create the different designs, because prototype एक बार में नहीं बनता है किसी का, आपको क्या करना पड़ता है that you have to go for number of the iterations. तो हम लोग क्या करते हैं डिजाइन को बार बार चेंज करना होता है, तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर दी मैन्युफैक्चरर कि वो जब प्रोटोटाइपिंग किसी की कर रहा है तो होता क्या है कि आपको बार बार डिजाइन चेंज करना पड़ता है, और जब आप किसी का प्रोटोटाइप बनाते हैं तो उसमें दे आर द नंबर ऑफ द स्टेजेस आर ओवर देयर, आपको कास्टिंग करनी है, फिर उसको मशीनिंग करनी है. बट यहाँ पे क्या है दैट यू आर हैविंग वन कैड मॉडल जिसको कि आपको केवल चेंज करना है और उसको सीधा मशीन को दे देना है, एंड दैट यूज टू क्रिएट द मॉडल. ठीक है, तो दैट्स वाई द नेम इज गिवन द रैपिड प्रोटोटाइपिंग, बिकॉज रैपिडली आप अपने सिस्टम में इसके डिजाइन को चेंज करके और आप एक मैन्युफैक्चरिंग कर पा रहे हैं. ठीक है, एंड दिस इज बिकॉज द प्रोसेस वर ओरिजिनली कंसीव्ड एज फास्ट एंड मोर कॉस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर क्रिएटिंग द प्रोटोटाइप फॉर द प्रोडक्ट डेवलपमेंट विद इन द इंडस्ट्री. As you can see that this basically table is given over here, that in the 1980s the first patent application given by the Dr. Kodama in the Japan in May 1980, and after that in the 1986 the first patent was issued to the Charles Hull for the SLA, that is the stereolithography, that is the first technology being developed in the additive manufacturing. Then in 87 in the 1987 the SLA1 was introduced. Okay. So this is being written over here that the Charles Hull was the first to develop the technology. Then after that SLA works by the curing. So this technology when it is being developed, it is basically means work by curing and the solidifying the successive layer of the liquid photopolymers. Means this is being developed for the resins first of all, and they are being used to be cured by the UV lasers. Okay. Then the field that came to know variously as additive manufacturing, rapid prototyping and 3D printing was known. Means there are the different kind of the name was given to this technology. बहुत सारे नाम दिए गए, rapid prototyping, somebody call it as a 3D printing, somebody call it as additive manufacturing process. So how we will just decide that what we just call this technology, because now this technology is not only being used for the prototyping, so we just call it as a 3D printing, but we can't also say that it is a 3D printing, because when you just see that the 3D printing manufacturing, so you will just see that there is only a half dimension in the vertical direction, so we can call it as a 2.5 dimensional printing. Okay, not the complete 3D printing. Okay. Now in 1989 SLS patent was issued, then the EOS sold its first stereo system. So this is about the history that FDM patent was issued to the statuses in the 96. The Sanders prototype will come in the 1997 RCAM was established. So as the technology was established, means for the lasers, for the electron beams, they are the different kind of the you can say the investors will come and they will used to develop their companies. Okay. So this is about the history, means how it is being developed this technology additive manufacturing. Now we will discuss about the advantages of the additive manufacturing. Why we are just saying that this technology or this manufacturing technique is basically suited to the industry 4.0. So there are the various advantages of this additive manufacturing technique. The first advantage is the design flexibility. The second advantage is the cost of geometric complexity. The third is dimensional accuracy. Fourth is no need of assemblage. Fifth is time and the cost efficiency in the production run. So let us start one by one in the detail. When we just talk about the design flexibility, जब हम बात करते हैं design flexibility की, तो as you can see that design flexibility क्या है, that almost any shape can be manufactured. मतलब आप कोई भी shape बना सकते हैं इससे. ठीक है, आपके पास कैसा भी प्रोडक्ट है, आप उसको या तो स्कैन करके और यू कैन क्रिएट दैट कैड मॉडल, और वॉट एवर यू विल सी यू कैन, इफ यू कैन इमेजिन दैट दिस प्रोडक्ट कैन बी वी जस्ट रिक्वायर टू बी मैन्युफैक्चर, हमको मैन्युफैक्चर करना है, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है और आप उसको अगर कैड में बना देते हैं तो यू कैन जस्ट मेक अ प्रोटोटाइप ऑफ दैट इन दिस एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग.
Okay, no constraints such as fixtures, cutter reachability, diverse tooling etc. like in the traditional machining, जैसा कि हमारा CNC में होता है. वहाँ पे अगर आपका कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है तो होता क्या है कि यू जस्ट रिक्वायर्ड अ फिक्सचर ओवर देयर, ठीक है. और कभी कभी हमारी ऐसी शेप होती है कि जहाँ पे हमारा कटर नहीं पहुँच पाता है, तो कटर रीचेबिलिटी इज ऑल्सो अ कंस्ट्रेंट ओवर देयर. डाइवर्स टूलिंग, हम लोगों को बहुत सारे टूल यूज करने पड़ते हैं वहाँ पे, है ना, इन द CNC. जस्ट लाइक इन द ट्रेडिशनल मशीनिंग भी हमें हमारे बहुत सारे टूल हम लोगों को यूज करने पड़ते हैं, और CNC में भी हमें बहुत सारे टूल यूज करने पड़ते हैं. बट एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में क्या है, दैट आपके पास डाटा है, यू आर हैविंग अ 3D मॉडल, आप उसको स्लाइस बाय स्लाइस कन्वर्ट करिए STL फाइल में और उसको सीधा मशीन को दे दीजिए, और वो दैट विल बी डिपॉजिटिंग दैट योर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग. ओके, नाउ इट इज इजी टू मेक चेंजेस इन द मॉडल बाय जस्ट एडिटिंग द CAD मॉडल. मतलब होता क्या है कि दैट, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, आपको सपोज करिए बोतल बनानी है, ठीक है. अब बोतल एक बंदे को चाहिए कि दैट योर जो कैप है वो बहुत नैरो हो, बहुत छोटा हो, या फिर, है ना, और एक बंदे को चाहिए कि वो पूरा बड़ा हो, ठीक है. सबको बोतल का डिजाइन अलग अलग चाहिए, ठीक है. तो होता क्या है कि एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए बड़ा डिफिकल्ट है कि इतनी सारी डाई बनाना, ठीक है. अगर उसके पास अगर 3D प्रिंटिंग की मशीन होगी तो जैसा प्रोडक्ट आपको चाहिए, जैसा बेसिकली कस्टमर की डिमांड है, आप उस हिसाब से अपने डिज़ाइन को अपडेट करिए, एडिट करिए, कैड में बनाइए और उसको फिर सीधा प्रिंट कर दीजिए, ठीक है. तो वो एडवांटेज आपको ये देता है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है. दैट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट विदाउट मेकिंग सेटअप चेंजेस, ठीक है. और ये इसकी कैपेबिलिटी है दैट इट इज टू प्रोड्यूस वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट विदाउट मेकिंग सेटअप चेंजेस. मतलब कोई भी सेटअप चेंज करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है. आपके पास कैड बेसिकली फाइल होनी चाहिए और आप उसको पूरा का पूरा प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है. नाउ cost of the geometric complexity, very less influence on the cost of product due to the complexity of the product. होता क्या है कि जब आप किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जाएंगे तो वो आपको पहले प्रोडक्ट दिखता है कि दैट हाउ योर प्रोडक्ट इट इज, तो वो क्या करता है कि ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स है ना, तो वो आपसे पैसा उस हिसाब से फिर मांगता है, ठीक है. बट ओवर हियर कॉम्प्लेक्सिटी इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉस्ट, बिकॉज चाहे कैसा भी प्रोडक्ट हो, आपको क्या करना है, दैट यू हैव टू डिवाइड दैट होल प्रोडक्ट इनटू द लेयर्स. Okay, so though it is very less influence on the cost of any complexity of the product. Easy to create the complex shapes and the product part by just using the CAD software packages. आप बड़ा easy है, कोई भी complex है, shapes हैं आपके पास, ठीक है, कोई कस्टमाइजेशन करना है आपको किसी कस्टमर के लिए प्रोडक्ट स्पेसिफिकली, तो आप उसको बहुत ईजिली कर सकते हैं विदाउट एनी हैविंग एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. ओके, नाउ we just talk about the dimensional accuracy. So the dimensional accuracy determines the deviation of the finished model when compared to the original digital model. Means अगर dimensional accuracy की मैं बात करूँ तो accuracy is basically nothing but a layer of this additive manufacturing technique. मतलब जो हमारी layer होती है that is basically representing dimensional accuracy. जितनी fine वो layer होगी उतना फाइन हमको एक्यूरेसी मिलेगी, जितनी वो थिक होगी लेयर दैट विल बी नॉट एक्यूरेट, मीन्स द प्रोडक्ट जो होगा आपका वो एक्यूरेट नहीं बनेगा, ठीक है. बट अगर हम लोग इसको दूसरी वे में देखें, दैट विल ऑल्सो मीन्स इंक्रीज द टाइम टू प्रोड्यूस एनी प्रोडक्ट. अगर आप लेयर्स बढ़ा देते हैं बहुत सारी, अगर लेयर की थिकनेस को कम कर देंगे, मीन्स योर नंबर ऑफ द लेयर्स आर इंक्रीजिंग, आपकी जो लेयर्स हैं वो इंक्रीज कर जाएंगी. अगर आपकी लेयर्स इंक्रीज कर गई मीन्स you are increasing the time to produce that product. Okay, so dimension accuracy determine the deviation of the finished model when compared to the original digital model, ठीक है. So that will determine basically the deviation कि how the finished model and how your original digital model is. Very less or negligible tolerance are provided in the AM. यहाँ पे बहुत ही कम टॉलरेंस हम लोग प्रोवाइड करते हैं. जस्ट लाइक इन द कास्टिंग हम लोग बात करें तो वहाँ दे आर द डिफरेंट काइंड ऑफ द टॉलरेंस वी हैव टू गिव बिफोर प्रोड्यूसिंग एनी प्रोडक्ट. ओके, हमारे वहाँ पे 4 से 5 टॉलरेंसेस हमको देने पड़ते हैं, बिकॉज वहाँ पे क्या है कि मोल्टन मेटल है एंड दैट इज टू बीइंग कन्वर्टेड इनटू द सॉलिड फॉर्म, वो उसको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होना है, ठीक है, लिक्विड को सॉलिड में. तो डेफिनेटली देयर विल बी सम डेविएशंस और देयर विल बी सम टॉलरेंस दैट वी हैव टू गिव इन. ओके, सो पार्ट टू द नैनो स्केल एक्यूरेसी कैन बी मैन्युफैक्चर्ड विद द प्रिसाइज 3D प्रिंटर्स. अगर हमारे पास प्रिसाइज 3D प्रिंटर है तो वी कैन ऑल्सो प्रिंट द नैनो स्केल एक्यूरेसी ऑफ द प्रोडक्ट्स. ओके, नाउ नो नीड ऑफ द असेंबलेज, कोई असेंबली की जरूरत नहीं है हम लोगों को.
इट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द सिंगल पार्ट असेंबली, मतलब एक सिंगल स्टेज में आप प्रोडक्ट को बना सकते हो, ठीक है। जैसे कि आप लोग देखते हैं दैट अगर हम लोग कोई भी प्रोडक्ट बनाने जाते हैं तो वहां पे हम लोग को पहले कास्टिंग करनी है, दैट इज द प्राइमरी प्रोसेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग। आफ्टर दैट वी यूज टू गो फॉर द सेकेंडरी प्रोसेस, फॉर्मिंग कर रहे हैं या फिर हम लोग को मशीनिंग करना है या फिर हम लोग को वेल्डिंग करनी है, दी आर द बेसिकली सेकेंडरी प्रोसेस। बट ओवर हियर अगर आप देखें तो सारा का सारा जो प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज बेसिकली बीइंग प्रोड्यूसेस इन अ सिंगल गो। The parts are joint, are printed in a place and are suspended by the support material that must be removed in the post processing। मतलब अगर आपको कोई ओवरहैंगिंग पार्ट अगर बनाना है, ओके, तो आप कैसे बनाएंगे उसको, दैट यूज टू गिव सम सपोर्ट मटेरियल, ओके। अगर कोई ओवरहैंगिंग पार्ट है, सपोज इफ यू आर क्रिएटिंग सम ओवरहैंगिंग पार्ट, सपोज लाइक दिस, तो अगर आप इसको लेयर बाय लेयर बनाएंगे तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर दी ऑफ दिस फर्स्ट लेयर टू हैव दिस सेकेंड लेयर ऑन इट। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ सपोर्ट मटेरियल लगा देते हैं, तो दैट सपोर्ट मटेरियल कैन बी रिमूव्ड इन दी पोस्ट प्रोसेसिंग, हम इसको पोस्ट प्रोसेसिंग में रिमूव कर सकते हैं, ओके। सो व्हेन कंपेयर्ड विद द ट्रेडिशनल मशीनिंग इट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ असेंबली द पार्ट्स, ठीक है। तो ये आपकी पूरी जो साइकिल है, इन्वेंट्री रखने की साइकिल और ये सब पूरा इसको बिल्कुल रिड्यूस कर देता है, ठीक है। नो टाइम एंड द कॉस्ट एफिशिएंसी इन द प्रोडक्शन रन। Unlike most of the traditional machining process, AM is suitable for the low volume production। जैसे कि आप सब में देखते हैं कास्टिंग है या फिर CNCs हैं, तो वहाँ पे क्या है कि बहुत तेजी से काम होता है, ठीक है। आपके पास कोई एक चीज़ आई, बैच में आई, तो यू हैव टू डू एनीथिंग इन अ वेरी फास्ट मैनर। बट यहाँ पे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग इज अ स्लो प्रोसेस इन दैट, ठीक है। ऑन डिमांड एंड ऑन साइट प्रोडक्शन इन AM रिड्यूसेस द इन्वेंटरी कॉस्ट एंड द टाइम रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये बेसिकली ऑन डिमांड या फिर ऑन साइट प्रोडक्शन आप इसको बोल सकते हैं, जहां पे ये इसका बेसिकली बेस्ट यूज है, ठीक है, और लो प्रोडक्शन के लिए इसका बेस्ट यूज है। वेरी लेस मटेरियल वेस्टेज एज कंपेयर्ड टू दी अदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, दैट इज द मैक्सिमम यील्ड, ओके। सो मटेरियल वेस्टेज की अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही कम मटेरियल वेस्ट इसमें होता है, बिकॉज जैसे कि हम लोग अगर बात करें किसी के प्रोडक्ट की, कोई भी एक प्रोडक्ट लेते हैं, तो होता क्या है कि दैट वो प्रोडक्ट पहले हम लोग कास्ट करते हैं, मींस पूरा ब्लॉक हम लोग पूरा कास्ट करते हैं और फिर उसको हम लोग मशीनिंग पे लगा देते हैं, ओके। तो मशीनिंग में होता क्या है दैट आप उसके जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल है आप उसको रिमूव कर दे रहे हैं, मींस आप क्या कर रहे हैं दैट यू हैव टू रिमूव दैट मटेरियल, मतलब आप मटेरियल को वेस्ट कर रहे हैं। बट इन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आप बिल्कुल भी मटेरियल वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ही कम मटेरियल वेस्ट होता है। इफ यू जस्ट टॉक अबाउट दी FDM, तो बहुत ही कम मटेरियल वेस्ट होता है वहाँ पे, ठीक है। अगर पॉलीमर की बात करें, हम लोग पॉलीमर प्रिंटिंग की बात करें, मेटल में थोड़ा वेस्ट होता है बिकॉज ऑफ दी दिस मीन्स वी आर यूज टू फैट दी पाउडर, और फिर हम लोग वहाँ पे लेजर चलाते हैं, बाकी जो मटेरियल होता है उसको हम लोग हटा देते हैं, तो वहाँ थोड़ा मटेरियल वेस्टेज होता है। बट दैट मटेरियल इज ऑल्सो वेरी वेरी लेस देन दी दिस कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ओके। सो we will finish this over here, so thank you so much।